हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार और मैं स्वागत करता हूँ इकरा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट एस्पेक्ट फॉर कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। मैं अभी आज से लेकर 5 डेज है ना, आज मंडे है, आज मैंने स्टार्ट किया है 11 मार्च, आई गो टिल 15 मार्च। तो जो भी एग्जामिनेशन है ना, अभी जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम होना था 17 को, अब वो टल गया है। Now the exam will be somewhere, the date has been postponed till July. तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, बट जो अभी अपकमिंग एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है, उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं काफ़ी लंबा टाइम नहीं लूँगा, आज अभी सेशन स्टार्ट होने में भी टाइम लग गया है। सो वी विल बी हैविंग क्लास एट 8 o'clock, इस टाइम पे जो हम लोग मिल रहे हैं, और ये यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सेशन किया जा रहा है। सो आई विल बी सीइंग योर चैट बॉक्स, है ना, मैं आपके चैट बॉक्स में देखता जाऊँगा। इसलिए मैंने यार लैपटॉप रखा है, मेरे सामने लैपटॉप इसलिए रखा है ताकि मैं आपके चैट को मॉनिटर कर सकूं और जो भी क्वेरीज हैं, है ना, उसको मैं एड्रेस कर सकूं। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सो मेनी ऑफ यू आर हियर एंड लाइव राइट नाउ। तो मुझे काफ़ी खुशी है आप लोगों से। और एक चीज़ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अभी पढ़ाई के मोड में, यू ऑल आर इन द स्टडी मोड। अब टाइम टिक 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 टिक, है ना, कम होता चला जा रहा है। तो पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पंकज सिंह हैज जॉइंड हियर, सो गुड इवनिंग पंकज। गुड इवनिंग राकेश यादव जी, मैथ्स क्लासेस 2.0, जय हिंद सर। सो दैट इज व्हाट ही हैज सेड। सो द पीपल हैव जॉइंड राइट नाउ, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वन बाय वन वी विल बी गोइंग टू द एरियाज। क्या ध्यान रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वॉट एवर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, राइट, ओवर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल 2 साल में जो कुछ भी नई डेवलपमेंट हुई है, उनके बारे में आपको अवगत होना है ना। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्लस क्वेश्चन विल बी अप्लाइड। कहने का मतलब है वो कहीं ना कहीं थ्योरी से लिंक्ड होगा, है ना, थ्योरी से लिंक्ड होगा। जो मैं हर बार अपने सेशंस में, अपने क्लासेस में, मैं जहां जहां पढ़ाता हूँ, वॉट एवर क्लासेस आई टेक, तो वहां पे मैं ये बात को हमेशा दोहराता हूँ कि आपको पहला थ्योरी पार्ट को अच्छे से करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है आपका करंट डेवलपमेंट, है ना। 2 अप्रोच होते हैं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने का, 2 अप्रोच होता है। एक अप्रोच है जहां पर आप करंट एस्पेक्ट को आप लेते हो, ठीक है, करंट एस्पेक्ट यहां पर है, और यहां पर थ्योरी पार्ट है जो कि सिलेबस का पार्ट है, जो पाठ्यक्रम में। एक अप्रोच ये होता है कि आपने सिलेबस को पहले अच्छे से किया, ठीक है, थ्योरी पार्ट को आपने अच्छे से किया, जो स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसको आपने अच्छे से किया, और फिर आपने करंट एस्पेक्ट को वहां पर लिंक किया, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी सोर्सेस हैं, मैगजीन वगैरह, वो सारी चीजें। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है, कई स्टूडेंट जो है ये चीज करते हैं, जो स्टैटिक पार्ट होता है, तो वो एक अप्रोच होता है ये चीज, एक है बॉटम अप, ये हो गया बॉटम अप, कि आपने सिलेबस को अच्छे से किया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया, उसके बाद आप करंट एस्पेक्ट में जा रहे हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वो करंट अफेयर्स को अपना बेस बनाते हैं और करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी या सिलेबस को कवर करते हैं, जैसे ये अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है। दोनों अप्रोच अपने जगह पे ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन किस ढंग से उसको पढ़ना चाह रहा है। यहां पर क्या होता है कि यू आर कवरिंग ब्रॉड। अब ये समझो कि आपने यह सिलेबस कवर किया और फिर आप एक्सपैंड कर रहे हो, दैट मीन्स ये आपका बेस है, और आप फिर करंट अफेयर्स में बिगर डोमेन पे आप जा रहे हैं, यानी कि आप धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप चीजों को लिंक करते जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, लेकिन आप नैरो डाउन कर रहे हो सिलेबस पे। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कि
पूरी तरह से कवरेज नहीं होता। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, करंट अफेयर्स को तो पूरा आपने कवर किया है ना, जो करंट एस्पेक्ट है, करंट अफेयर्स, जो करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपने तो यहाँ पर अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पर इस जगह पे जो है आप क्या करो, करंट अफेयर्स को तो आपने अच्छे से कवर करना चालू किया आपने, और फिर आप नैरो ऑन हो रहे हो, जीरो ऑन कर रहे हो जो थियरी पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है। आप यहां से फिर वापस यहां नैरो ऑन हो रहे हो। तो यहां पे मेरा कहना यही है कि इसमें प्रॉब्लम बस एक ही यही है कि जब आप बहुत सारा करंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट नहीं है, मतलब कहने मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो मिस कर रहे हैं। आपने क्या किया, केवल न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स, बाकी चीजों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है। और फिर आप उसी चीज को वापस आप बुक में जा रहे हैं, मटेरियल में जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट लेवल जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट आई वांट टू से दैट यू हैव डन द करंट अफेयर्स, आप सब पढ़ रहे, लेकिन आपका ये पार्ट किया हुआ नहीं है, दिस पार्ट यू हैव नॉट डन। तो आपने क्या किया, करंट अफेयर्स तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर देन यू आर कमिंग टू टॉपिक जो सिलेबस का वो आप कर रहे हो। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू यही होता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक चीज नहीं पता है, तो कई बार करंट अफेयर्स समझने में दिक्कत आती है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स प्रॉपरली। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आप करंट एस्पेक्ट को समझने के प्रयास में आप फिर आप टेक्स्ट बुक उठाते हो, फिर टॉपिक को पढ़ते हो, अब फिर वहां क्या प्रॉब्लम है कि जो करंट के टॉपिक्स है उसी के थ्योरी पार्ट को पढ़ रहे हो, ये लिमिटेड आपका सोर्सेस है। तो यहां पर क्या रिस्क होता है, द बिगेस्ट रिस्क हियर इज दैट कि अगर यूपीएससी ने कहीं और से बाहर से पूछ लिया, या किसी भी एग्जाम में, वॉट एवर स्टेट पीसीएस एग्जाम या किसी भी एग्जाम में कुछ बाहर से क्वेश्चन आ गया, देन यू आर एट लॉस, देन यू आर एट लॉस। तो मैं यही चीज बार बार कहना चाहता हूं कि एक मिथ है ना, एक मिथ चलाया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप करंट एस्पेक्ट पढ़ लो, आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा, विच आई थिंक इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच ये होता है, ये सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि पहले आपने पूरा थॉरोली सिलेबस को पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझा, जनरल साइंस, बेसिक साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पूरा अच्छे से किया, और फिर आप एक्सपैंड करते हो। हाँ, लेकिन यहां पर ये आता है कि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा डोमेन है। शुरुआत में बिगिनिंग, जब आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत में ये अप्रोच मैटर करता है। शुरुआत में आपको ये अप्रोच फॉलो करना होगा। लेटर ऑन, बाद में जब आपने ये कर लिया है, तो फिर ये अप्रोच काम आता है। ये अप्रोच काम आता है 11th आवर में। दिस अप्रोच हेल्प्स इन रिवीजन, है ना, ये अप्रोच का भी हेल्प करता है रिवीजन करने में, कि आपने शुरुआत में आपने ऐसे पढ़ाई किया, आपने पूरा थियरी समझा, पूरा सिलेबस पढ़ा, आपकी फाउंडेशन बन गई, अब करंट को आप लिंक कर रहे हो, तो आपके लिए करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना आसान हो गया। और फिर एग्जाम से पहले, है ना, 2-3 महीने एग्जाम से पहले आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट एस्पेक्ट को ले रहे हो और उसको फिर नैरो डाउन कर रहे हो, जो जो स्टैटिक एरिया, जो जो उसका थ्योरी पार्ट है। तो ये शुरुआत है, ये अंत है। ठीक है, शुरुआत में आपको ये अप्रोच रखना है, अंत में आपको यहां जाना है, बिफोर द एग्जाम। क्योंकि जब शुरुआत में आपकी नॉलेज नहीं होती, जब आप यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू हैव टू बिल्ड अप द बेस so that you are able to understand science and technology current perspective. बाद में चलकर एग्जाम से पहले this approach works, you are now aware of already theory part, आपने अपना ग्राउंड वर्क अच्छे से कर लिया है। अब आपको जरूरत है कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसको जीरो ऑन करना, नैरो डाउन करना, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस है
जो स्टैटिक पार्ट है वो करंट से जुड़ रहा है। तो दोनों अप्रोच आपको रखने, बट इनिशियल फेज यू हैव टू डू दिस। अब मैं आता हूं आज के सेशन पे। सिंस वी आर हैविंग करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर नाउ 5 days आई एम गोइंग टू टेक करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वी आर हियर, मतलब यहां से आप ये इस जगह पे गए हो, यू हैव गॉन टू दिस एरिया, ये पार्ट पे। तो ये जो 5 days का जो क्लास है विल बी दिस अप्रोच। और मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये पार्ट अच्छे से कर लिया होगा, सिलेबस विद द करंट अफेयर्स। मतलब बिफोर एग्जाम अब ऑलमोस्ट 2.5 months बच गए, राइट। दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम के 2.5 months बचे हुए हैं, लेस देन 90 days आर लेफ्ट। तो ये पार्ट मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि जहां भी आपने क्लासेस किया होगा, वेदर इट इज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आपने जिस माध्यम में जहां भी आपने अपनी पढ़ाई की होगी, आपने अपना तैयारी किया होगा, ये चीज आपने कर रखा है कि पहले आपने क्लास में बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है ताकि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में आसानी हो। आप करंट अफेयर्स को कर रहे हो, अब आपका फोकस यहाँ पर ये चीज है, जो भी करंट अफेयर्स वेबसाइट, कंपाइलेशन, मैगजीन, सारा चीज है। अब आपको जीरो इन करना है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है जो करंट से लिंक किया हुआ है। तो अब आपका ये पार्ट कवर होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड दैट, ये चीज मैंने आपको बताया। अब क्योंकि ये 5 classes इस पे है, तो विल बी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एरियाज देयर। तो ये चीज मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, राइट, ताकि जो लोग अभी वॉच कर रहे हैं, है ना, वो चीज ये बात समझ जाए कि इस सेशन का मेन मकसद क्या है। करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना सिलेबस के साथ, ये मकसद है, ठीक है। जब वो नॉर्मल क्लासरूम होता है तो ये मकसद होता है कि जहां आप सिलेबस पढ़ते हो उसको करंट अफेयर से डील कर दो। तो ये होता है क्लासरूम में, व्हेन यू आर डूइंग द क्लास देयर, है ना, बेसिक चीज वहां पर है। तो ये चीज का वहां पर याद रखना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद ये चीज। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी एक ये आ रहा है कि हिंदी मीडियम वाले टेस्ट कैसे दें। A to Z बैच ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। अब आपने A to Z जो बैचेस आपने ले लिया है, अब टेस्ट के लिए जो है, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी टॉपिक्स होंगे यहाँ पर, इसके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, Q&A, उसका आपको अभ्यास करना है। आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया है, अब आप लास्ट मोमेंट में हो, नाउ यू आर इन द प्रिपरेशन मोड। इसका जो प्रैक्टिस है ना, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, वॉट एवर द प्रैक्टिस यू हैव, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। इसमें ट्राई करना है कि डिफरेंट डोमेन जो क्वेश्चन का, जैसे कि पहला आता है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष और जो उसके संदर्भ में एरिया है, उसको थॉरली करना है। फिर आपको कनेक्ट करना है इसको, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, दैट यू हैव टू डू। और बायोटेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना है हेल्थ के साथ। हर साल बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो, इसके अलावा जो है न्यू टेक्नोलॉजी, जो है नवीन जो टेक्नोलॉजीज है, उसको थॉरली पूरा अच्छे से तैयारी करना है। और खास तौर पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, कई बार होते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी, कि भविष्य में हम उसको यूज करेंगे, ऐसे टेक्नोलॉजी एरिया जो है। और इसमें जो इमर्जिंग एरियाज है, जो भी टेक्नोलॉजी के इमर्जिंग एरियाज है, उसको अच्छे से आपको करना है। उस संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। इसी संदर्भ में एक और एरिया आता है, दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ICT को लिंक करना है कंप्यूटिंग के साथ, एडवांस कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी को जोड़ना है कंप्यूटिंग के साथ। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो सारे एरियाज को कनेक्ट करना है। बायोटेक्नोलॉजी को हेल्थ के साथ कनेक्ट करना है, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी की, वहां पर स्पेस को एस्ट्रोनॉमी के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है डिफेंस,
सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट आता है, जहां पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट आता है, जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आता है, तो देयर सिक्योरिटी एस्पेक्ट में जो है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ लिंक करना है न्यूक्लियर। जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में आता है तो उसमें आपको लिंक करना है डिफेंस के टॉपिक को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ। डिफेंस में जो भी मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट, जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्लस जो भी न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसको कनेक्ट करना है। तो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंटीग्रेट करना है चीजों को, है ना, उसको लिंक करके देखना है। और जब आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो आपको बायोलॉजी, ये डू द बायोलॉजी पार्ट प्रॉपरली देयर, ठीक है। और एक और डोमेन आता है यहाँ पे एनर्जी। तो एनर्जी में जो है, एनर्जी के साथ में कई सारी चीजें हैं, बट एनर्जी के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज आते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी, विंड टेक्नोलॉजी, है ना, बायोमास टेक्नोलॉजी, जियोथर्मल, ओशियन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितने भी नए एरियाज ऑफ एनर्जी इमर्ज हो रहे हैं, बायोफ्यूल, है ना, हाइड्रोजन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, तो हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको उन सभी एरियाज को लिंक करते जाना, और जो भी करंट डेवलपमेंट आ रहा है उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से करना है। तो ये 5 दिन का जो प्रोग्राम है, वी विल बी सीइंग ऑल दिस काइंड ऑफ डायमेंशंस, ये सारे डायमेंशंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, कनेक्ट विथ आवर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट, ISRO, DRDO, BARC, our डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं, और उनके जो जो डेवलपमेंट है उनको साथ साथ में लिंक करते जाना है। अचीवमेंट जो है ना, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB का जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो ये सारे चीजों को यहाँ पर कनेक्ट करते जाना है कि जो चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में यहाँ पर आता है, ये जो है PIB अपडेट जो है, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के जो भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ISRO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, तो जितने भी ऐसे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी ऐसे एरियाज हैं, जो भी इसके अचीवमेंट्स हैं, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर जो भी इसके डेवलपमेंट हुए, प्रोग्राम पॉलिसी, उसको भी कनेक्ट करते जाना है। समटाइम्स इन प्रीलिम्स एग्जाम देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, है ना, वहां पर वो उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस यहाँ जो है PIB अपडेट के अलावा जो है एक आता है ये चीज, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति जो है, तो विज्ञान प्रगति के जो भी आपको कंपैरिजन मिल जाते हैं, है ना, साइंस रिपोर्टर का, तो दैट यू हैव टू फॉलो, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो है कई बार आप देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट को साइंस टेक से कनेक्ट करता है, इन्वायरमेंट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आता है, अभी इस टाइम पे सबका कंपाइलेशन आ जाएगा, जैसे प्रीलिम्स करीब आएगा तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ये सभी सोर्सेस के कंपाइलेशन अवेलेबल होता है, तो आपको वैसे कंपाइलेशन को एक बार रिव्यू करना है, डाउन टू अर्थ जैसे यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये जो मैंने बताया, जो डेली करंट अफेयर्स का जो न्यूज़पेपर आता है, जो न्यूज़पेपर का सारी चीजें नहीं, जो भी न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहे हैं, तो ये सब जितने भी कंपाइलेशन आते हैं यहाँ पर, जहां उसका प्रॉपर थिंग्स आर देयर, तो वो पार्ट जो है उसको रिव्यू करना है। और जब आप रिव्यू कर रहे होते हो, व्हेन यू आर रिव्यूइंग दिस मटेरियल्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के जितने रिव्यू है, आपको फिर उसको थियोरी के साथ लिंक करना है। रीड, रिवाइज एंड रिकनेक्ट विथ बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप उसको पढ़ रहे हो, आप याद कर रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, आप साथ साथ में उसको थ्योरी के पार्ट साथ लिंक कर रहे हो। तो ये अप्रोच अभी लास्ट आवर में रखना है, यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके चैट बॉक्स को देख रहा हूँ, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछते जाना, आई विल कीप ऑन रिप्लाइंग देयर, ठीक है।
तो ये चीज को फॉलो करना, ये चीज अभी लास्ट मोमेंट, पर्टिकुलर जो लोग अभी एग्जाम देंगे, विच ओवर, मतलब अभी आप एग्जाम देने की तैयारी पे हो, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, मार्केट में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, उसको फिर वापस थ्योरी की पार्ट जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल करंट अफेयर्स के चक्कर में आपने थ्योरी पार्ट नहीं किया और यूपीएससी में इस बार का क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया गया, तो आप लॉस पे रहोगे। तो विदाउट गोइंग टू द लॉस, तो वो चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आई एम नाउ गोइंग टू द टॉपिक। आज हम लोग स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी चर्चा कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अंतरिक्ष विज्ञान, है ना, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स गो टू द एरिया हियर। प्रीलिम्स 2024, है ना, ये हम लोग का टारगेट है। और इस संदर्भ में जितने भी चीजें हैं, जो ऐसे न्यूज़पेपर में करंट एस्पेक्ट में सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस सेशन, 5 day सेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जितने चीजों को मैं बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक करते जाना है। दिस विल हेल्प इन द एग्जाम। तो लेट्स बिगिन हियर, शुरुआत करते हैं। You all know that astronaut wings have been given by our Prime Minister Mr. Narendra Modi to 4 Indian Vyomnaut, Indian astronauts. आप सबको पता है ना, गगनयान मिशन one of the very very important missions of ISRO, है ना। और अब ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो हैं, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। आने वाले टाइम में, भविष्य में इनको याद किया जाएगा। दे विल बी रिमेंबर्ड, कमिंग फ्यूचर दे विल बी रिमेंबर्ड। ये 4 जो इंडियन एयरफोर्स के जाबाज जो ऑफिसर्स हैं, हु आर नाउ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, अब सबको पता चल गया, जग जाहिर हो चुका है ना, ये चीज न्यूज में। एंड वेरी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, है ना, एस्ट्रोनॉट विंग दिया गया। तो यहाँ पर जो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, राइट। नाउ नायर इज फ्रॉम केरला, you know, Krishnan from Tamil Nadu. These 2 are from Uttar Pradesh. Angad Pratap and wing commander here, Shubhanshu Shukla, both belong from Uttar Pradesh. Out of the total 10 astronauts, these 4 people have been selected. और इनका extensive training चल रहा है already. They have been trained for many of the things what they require in the outer space. Still they are undergoing training, and they have as an IAS officers long experience of flying aircrafts, fighter crafts training. Like here group captain Mr. Nair has been a trainer, right. So they are now going to be the part of Gaganyaan mission, India's human space flight, right. ये सब चर्चा का विषय है। तो अब आपको उसको कनेक्ट करना है थ्योरी के साथ, यू हैव टू गो बैक टू द थ्योरी, राइट। तो वहां पर जो है, सो क्यूईपी प्रोग्राम, वो ओनली 3 days क्लास विल बी देयर। वन पर्सन इज आस्किंग द क्वेश्चन, साई लोकेश, सर विल योर एनवायरमेंट लेक्चर्स बी सफिशिएंट? आई एम योर स्टूडेंट। नो, इट विल बी ओनली 3 classes देयर। सी 3 classes, I can try my level best to cover maximum thing, but again you know that environment as a subject is very vast, and nowadays a lot of questions are coming from environment. So that part, that's what I've been like always been telling that many times. All these institutes and all, they have very restricted number of hours and classes. I'm trying my level best, whatever best possible can be there, I'm trying to do that one. But QEP program, kind of a program which has been designed there, it will be the part of it. So I will be trying to cover the important areas of environment there, in that area, right. So he is asking from some other instant question, but that's what I've just mentioned here. So यहाँ पर ये चीज है। Now let's look at here Gaganyaan mission.
let's suppose that UPSC asks question. So what I said here, at the last moment you have to go from current to the basic. So let us bring about that one. Let me go one by one the points here. What is the first thing here? Gaganyaan mission is India's first indigenous, स्वदेशी तौर पे इसको किया जा रहा है, indigenous human space flight, right? Flight mission. You all are aware of ISRO, Indian Space Research Organization. What we are going to cover here will be crew module. These 4 Indian astronauts will be in the part of a crew module, right? Which will be launched. You know that India's very strong rocket, LVM-3, launch vehicle Mark 3, which is the heaviest rocket of India, what we call as a GSLV. GSLV Mark 3, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3. Now where they will be placed? They will be placed into low Earth orbit. Up to 400 kilometers. अब ये keywords हैं. That's what I said. You have to read current affairs and then link to the theory part. आपको current affairs को फिर theory के साथ link करना होगा. ये जो भी keyword मैं use कर रहा हूँ. Low Earth orbit, 400 kilometer orbit of the Earth. What is low Earth orbit? What is near Earth orbit? What is a concept of orbit? Launch vehicle. What is a rocket? Launch vehicle. You study in your classroom program. जो GS का बैच होता है वहां पढ़ते हो. Now we are going from top down. That means we have taken a topic of current affairs, narrowing down to the syllabus. उसको हम डायरेक्टली नायर कर रहे हैं. तो LVM-3 जो कि GSLV Mark 3 का the version है, that will carry the human crew module to low Earth orbit and they are going to stay for 3 days. Stay in the outer space, है ना, बाहर अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की दूरी की जो ऑर्बिट है वहां पर 3 दिन के लिए they will be staying there for 3 days, right? So I'm connecting the theoretical aspect of it. ये चीज है. Now what is another thing there? This particular mission, that means is a human space mission, but we are not using reusable launch vehicle. The LVM-3 will simply put that module in the space, which will go around the Earth, and then lower back and land on the ocean, sea and ocean. That will become the landing site of the module. Is indigenously developed, and for this the training of astronaut by 2 countries, they are providing this. One is by Russia and second is France. France and Russia are our 2 very important partners in space program. So 4 Indian astronauts, right? But that module has been designed for 3 of them. But I think ISRO has planned for 4 because if there is any kind of emergency at the last moment, so at least you have a backup. That's why the 4 Indian astronauts are there. But I believe that there may be also backup of other astronauts. है ना? अभी 10 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया था इंडियन एयर फोर्सेस में. अभी 4 के नाम, 4 को विंग कमांड एस्ट्रोनॉट विंग दिया गया है, जबकि ये मॉड्यूल में कितना है, 3 का बात है. हाउ मेनी पीपल एस्ट्रोनॉट विल बी गो? 3 ऑफ देम. एक को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पे इफ देयर इज समथिंग देन दे विल हैव द अदर आल्सो यूज. जो मुझे लगता है दे आर यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना, ठीक है. दे आर डूइंग ऑल द टाइप ऑफ प्रिपरेशन पार्ट. पूरा प्रिपरेशन पार्ट को वो अच्छे से कर रहे हैं ताकि कोई भी तरह हो. मतलब प्लान बी विल बी ऑल्सो रेडी. हमारा प्लान ए भी है, प्लान बी भी है. हमें चुकना नहीं है, राइट. भारत को जीतना है, हमें स्पेस में जीतना है और ये कर दिखाना है. तो इसरो इज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन. तो यहां पर ये चीज है, रशिया एंड फ्रांस. तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं? वन इज दैट
You know the microgravity, zero gravity. When you go to the outer space, the gravity is very less. The body physiology change. हमारा blood flow, heart function, organ functions, brain, everything undergo change. Biological change होता है when we are in the low gravity. तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है. Then यहाँ पर आता है space medicine. Then you know space food. जितने भी इसकी बुनियादी चीजें जरूरत चाहिए. Then you know space suit. All those kind of preparation are being now done there, and especially it's a multi-organizational kind of thing there, which is part of this Gaganyaan mission there. Now in this one, the two very important things. One is this one, pad abort test. One is the pad abort test, launch pad, Sriharikota. Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. A launch pad is just under the way of construction and will be ready very soon for Gaganyaan mission, particularly for the human space flight. Right? For crew module kind of program there, we are building a new kind of a launch pad. If during the type of liftoff or any kind of emergency, pad abort test, astronaut can escape safely. So that is one test is there. Second is re-entry test. What we call atmospheric re-entry test. जब वो वापस आएंगे, when the crew module will come down, so it will coming under a lot of high velocity, and you know when it enters the atmosphere, air friction, so it will create a lot of heat and everything. So it has to again seen that the kind of a dynamics, what is something called aerodynamics of that crew module which will get down. So uska ISRO has been continuously carrying out re-entry test. You know, crew, that is a atmospheric re-entry test. पहले भी किया गया unmanned, मतलब without human module re-entry. ISRO will carry out. Gaganyaan is just on the corner. By end of this year and the next year, we'll have the Gaganyaan. And third very important thing here, there will be a half humanoid Vyom Mitra, which will be assisting these astronauts in the outer space in carrying out a lot of work. They will be carrying out certain type of experiments in zero gravity, microgravity, and they will require certain type of assistance. So Vyom Mitra will be a kind of a robot, human robot, with a torso, that means only upper part, half. This upper part of this has been the part of it, so that will be a part of it. So again, you have to go through the keywords, the main points of it. करंट अफेयर्स में जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको नैरो डाउन करना है, मेन एस्पेक्ट पे आना है ना. ये बहुत चैलेंजिंग मिशन होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग मिशन, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट. सो लेट मी सी योर डाउट्स हियर. यस, गुड इवनिंग एवरीवन. नो, दिस इज द IQRA IAS प्लेटफॉर्म वेयर आई एम टीचिंग राइट नाउ. तो वो आपको IQRA से पता करना होगा कि व्हाट इज द मॉडलिटी देयर. आई एम जस्ट सीइंग योर चैट बॉक्स. Right, so one student is a 12th grader but want to get into UPSC there. That's good. You should try out. Right, you should always develop the approach, and that approach you should help you out there. There's one person, I can see the chat box there, right? So it's always there. Okay, now let me come to this part. Any idea? The photograph what you see right now.
कोई आइडिया हो वहां पर? आज मैंने भी जो कपड़े पहन रखे मैच कर रहे हैं. As an astronaut, since I have to teach the science and technology and space technology, I thought let me also wear a dress which may have some kind of a feel, and a dress also create that environment. Right? Yes. People who have been to the space, okay? All right. Let me give you an idea here. As India is preparing for Gaganyaan mission, जैसे भारत मैन मिशन की तैयारी कर रहा है गगनयान मिशन के लिए, नासा इज ऑल्सो ट्राइंग इट, राइट? अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, आफ्टर अपोलो मिशंस, man going to get back to the moon, human space flight mission of NASA is getting ready for landing on the moon, man to return back to the moon, है ना? Man to return back to the moon. Good. Akshay has given the reply. Here, the next big thing is coming to this one. Earth's moon. And now for this NASA, Artemis mission. Which mission? Artemis mission. You know Apollo 11 mission, Neil Armstrong, Edwin Aldrin. First man, right, two astronauts who landed on the moon. And after that, now NASA is planning to again return back to the moon. And it's a phased manner. Initially orbiter, rover, then man getting on the moon. So what you see right now, these are the astronauts for Artemis mission. Which mission? Artemis. NASA's ambitious space program to send human astronaut to the moon, Earth's moon, Artemis mission. Right? That is making the headline there. Right? So, now see, I am having 5 classes. Persons are asking the question in the YouTube. I am having the 5 classes there. मैं भी 5 क्लास ले रहा हूँ. ये 5 क्लास फ्री है, ठीक है? IQRA IAS का द्वारा ये 5 classes are free, right? But again, after that will be normal when I'll come to Kanpur and Pune for regular classes. तो वहाँ पे फिर मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा. तो ये 5 जो है ये चीज वहां पर है. This is what you have here. तो ये चीज है आर्टेमिस मिशन, ये आपको याद रखना है, मैन मिशन. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू दैट. नाउ यू नो चंद्रयान मिशन. नाउ इंडिया इज प्लानिंग फॉर चंद्रयान 4. रिसेंटली अभी न्यूज में चंद्रयान के बारे में न्यूज में था. अब चंद्रयान 4 जो है, अगर देखा जाए चंद्रयान 4 मिशन जो है, lunar sample return. We want to go to the moon again, land on the moon, take the sample of the moon, return back. So what is very important here, अगर इंडिया का इसरो का जो है, इंडिया का लूनर मिशन की बात करें, let's look at here. First of all, मैं टाइमलाइन बता रहा हूं. We started with Chandrayaan mission, Chandrayaan 1. It was only orbiter mission. यानी कि मून पे 100 किलोमीटर ऑर्बिट. It was just a orbiter mission, orbiting around the moon. Then we went for Chandrayaan 2. Now this was launched in 2008. 2008 में इसको लॉन्च किया गया. 2009
we reached to the moon. And then after 10 years, 2019, right, we tried, it was orbiter plus Vikram lander with rover, Pragya rover. So orbiter successful, but this was a failure. है ना, ये failure था. Then comes here, in terms of coming to the next level, India went for Chandrayaan 3. In between there was COVID-19, right? COVID-19 came in between, but we again tried there 2023 after the COVID, and orbiter was just a propulsion. It was only meant for propulsion system, plus the Vikram lander and rover. And you all know that we have been successful in landing. On south pole of the moon. Pragya rover, we were successful landing there. Now comes our next level, Chandrayaan 4. Now Chandrayaan 4, we are planning up for that. That is the plan for this year or the next year. That is a Chandrayaan 4. So what are they here? Orbiter, right? Orbiter. Then it will be lander rover, just like Chandrayaan 3, and then sample return. We will land, collect the sample, return back. यानी कि जो ऑर्बिटर होगा, the lander will go down with the kind of a module there, will collect the sample and again will go back. So just like, you know, landing, what we have done, deboosting. It deboosted, came down, and then just like a rocket will lift off after taking the sample, lift off, and again will go back to the part of this, and then again will come back. Very challenging. अभी तक ऐसा काम करने वाला जो कंट्री है वो यूएस है. USA has got that expertise. NASA has got that expertise of getting the sample returned there. Another one is ESA, European Space Agency, to get the sample from comet, you know, comet and asteroid from solar system, to get the sample and come back. है ना, जो भी ऐसे comet, asteroid वगैरह, ESA, European Space Agency, कि सैंपल रिटर्न करके वापस आना. नासा का एक मिशन था ओसिरिस रेक्स. क्या नाम है मिशन का? वन एस्ट्रॉइड नियर अर्थ एस्ट्रॉइड बेनू. नासा सेंट अ स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स व्हिच कलेक्टेड द सैंपल रिटर्न बैक. तो अब हमारा चंद्रयान 4 जो है, इट विल नॉट ओनली बी ऑर्बिटर लैंडर पार्ट, बट विल टेक द सैंपल, कम बैक. So that is here, return back. Lunar sample return back. Another very, very important project. India is going to have this. Now for this one, we use PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. C-11 was used. 2008 when we launched. 2009 it went to the Earth's moon orbit. Here we use this one, GSLV, MK3, M1. Again we use here LVM3, that is GSLV3, and again we will be using here LVM3, GSLV3. जिस जगह पे हमारा चंद्रयान 2 का लैंडिंग फेलियर हो गया,
where we crash landed. We were not able to do soft landing of Vikram lander with Pragya rover in where Chandrayaan 2 mission. उस जगह का जो है, साइट का जो है, you know that तिरंगा, जहां हमारा चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञा रोवर क्रैश लैंड हो गया था, सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया, तो दैट इज कॉल्ड तिरंगा साइट. व्हाई इट इज कॉल्ड तिरंगा साइट? बिकॉज इंडिया becomes a club of countries, elite club of countries to have flag on the moon. After US, European Space Agency, Russia, China, right? India is the country, and now Japan. Japan has also reached to the moon. जापान भी मून पे पहुंच चुका है. तो अगर हम देखें कितने कंट्रीज के चंद्रमा पे उनका फ्लैग है, फ्लैग ऑफ द कंट्री, तो यूएस, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, देन चाइना, नाउ जापान, नाउ कम्स द इंडिया. जिससे उसका नाम रखा तिरंगा, राइट? एंड हियर चंद्रयान 3, दिस लैंडिंग साइट. तो व्हाट इज द हियर सॉफ्ट लैंडिंग साइट, जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग हो गया था. व्हाट दिस साइट हैज बीन नेम्ड? जिस जगह पे प्रज्ञा रोवर landed softly on the dark side of the moon, south pole of the moon, right? The prime minister has given the name. What is the name here? Named Shiv Shakti. Shiva Shakti, that name has been given. Now we are planning for Chandrayaan 4. We'll land, collect the sample, return back. We'll get back to the earth. Another very important space mission, India is planning for that. So NASA is doing it alone or with the help of other agency. NASA is doing with the help of ESA, European Space Agency. NASA and ESA both partner each other in that part of it. Yes, Pratiksha, you are right. It's called Shiv Shakti. So that is what this all the plan is there, right? So sample return side, if you look at the photograph, is not very clear. We will be landing there, 1,517 kilogram. This will be the part of. So we will be going down. There will be a kind of equipment which will just fall, take the soil, lunar soil, and then will be a thruster, will be thrust, just like a rocket, will have upward propulsion, and will just go and meet with the orbiter. That means this one, right, 1,527 kilogram, this will descend, and then it will take the sample and ascend up. It will go up with the lunar sample. That's what we are planning for this. Another part of it which you have to be aware of it, and आपको current aspect में इसको पढ़ना होगा. And why dark side of the moon? क्यों south pole of the moon? South pole of the moon, because the dark side of the moon has a lot of minerals. Dark side of the moon has the kind of evidence of water. Dark side of moon has the traces of that information which may connect the early part of solar system. Dark side of the moon can give us understanding about Earth and the moon, the system which have formed in terms of study of solar system. That's why the dark side of the moon, south pole of the moon, is very, very important. Correct? So this is what is the part of it comes into that, which I have just mentioned. Now let's move to the next part of it. This is what I mentioned here. Just keep this point in mind. Now let's come to this one. क्या है ये? What is this? Yes, anybody? Another important topic for the exam, right? India's space station. India's space station. Bharti Antariksh Station. Right? Recently the chairman, right, Dr. Somnath, he announced that
After having successful Gaganyaan missions, we will go to the next one having our space station. India will build the space station. It's not Aditya. Madan Mohan, you're wrong. It's not Aditya. Is India's space station. Right? India is going to build the space station. So this is here Bharatiya Antariksh. That is a BAS. Right? Bharatiya Antariksh Station. That is where we are going to have this. अभी तक अगर देखा जाए स्पेस स्टेशन, अगर हम स्पेस स्टेशन की बात करें, इफ यू टेक अबाउट स्पेस स्टेशन वर्ल्ड वाइड, तो फर्स्ट इज द नासा. Initially NASA and Russia, which you have Roscosmos. In 70s, Cold War era, when time? Cold War. They were building there. Like, you know, Skylab. And this was Mir. Very important one built by Roscosmos, Russia, that time Soviet Union, Mir. कोल्ड वॉर के टाइम में इन दोनों के आपस में कंपटीशन था. नासा ने अपना स्काईलैब, है ना, सैल्यूट एंड स्काईलैब हुआ था. रशिया ने मीर बनाया था. अब यही जो मीर है, दिस मीर, इसी के ऊपर असेंबल करके बनाया गया ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. द प्रेजेंट टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज बेसिकली इट वाज बिल्ट अपॉन द मीर स्पेस स्टेशन, which was earlier built by Russia, that time Soviet Union. अंतरिक्ष की जो बैकग्राउंड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, है ना, रुचि के साथ पढ़ेंगे चीजों को, और वो चीज आप बैकग्राउंड में जाएंगे, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बताया अभी, सोवियत यूनियन हैज बीन अ वेरी पायनियर स्पेस स्टेशन. मीर बनाया गया था, उसी मीर को बाद में जाके इसको रीडेवलप करके आज के टाइम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS है. और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यू नो दैट विच ऑल द कंट्रीज आर देयर? नासा, देन रशिया, रॉसकॉस्मोस, देन यू नो JAXA. There are 5 agencies which are managing this ISS, International Space Station. Then comes here Canada, Canadian Space Agency. And then comes your, you know that, ESA, European Space Agency. Now is the turn of China. Right? Chinese Administrative Sciences, CAS, China. See here CSA. What is CSA? Canadian Space Agency. But when you take CAS, Chinese Aeronautical Science, they are building here. China is building its own space station called Tiangong. Tiangong. China अपना independent. China is building independent space station called Tiangong. Whereas right now these 5 agencies, NASA, Roscosmos, JAXA, Canada, and European Space Agency, they are managing international space station. Now India will join this league of countries, becoming the fourth agency. So now comes the ISRO. So ISRO is going to build this one, Bharatiya Antariksh Station. Right? Our country will build Indian Space Station, that is ISRO will be there. So if you look at this development there, future space station will have a lot of utility, a lot of functions. ना बहुत सारे इसके उपयोग होंगे. Right from meteorology, weather science, earth observation, remote sensing, whatever satellite does. At the same time, astronomical research, study of universe, finding out the mysteries of the universe, plus
experiment on microgravity, zero gravity, developing new products, plus space voyage, space tourism, space voyage, all these are will be part of space station. अब यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब स्टार्ट करेंगे. So India will start this will start in 2028 and will be completed by 2035. दो 2028 में हम अपना खुद का बनाना स्टार्ट करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में. ये सब जितने स्पेस स्टेशन होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, और 2035 में हम कंप्लीट करेंगे आवर ओन इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट. स्पेस, द डोमेन ऑफ स्पेस इज एक्सपैंडिंग वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है. लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी दैट इज टेकिंग प्लेस. तो हम पीछे क्यों रहेंगे? भारत पीछे क्यों रहेगा? भारत भी आगे बढ़ेगा, राइट? इंडिया विल ऑल्सो टेक द लीड. वी आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ, है ना? दैट इज व्हाट वी कम अक्रॉस. चाइना कर रहे हैं, हमारा नेबर जो है दैट इज बिल्डिंग देयर, तो वी विल ऑल्सो हैव टू गो इनटू दैट. इट हैज मेनी सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशन, रिमेंबर दैट. नॉट ओनली एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, it has also socio-economic aspect of it. Conducting research, developing new product for use on the earth. A lot of things will be there, right? So that is going to be another thing which was in the news. Now let's go into the next one. What is this? ISRO, NASA. NASA and ISRO. So what is this called as? You all are aware, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है. There is also very very important mission. Yes, anybody? I am seeing your chat box. मैं आपका chat box देख रहा हूं मैं. Anybody in the class? क्या है ये बताओ? What is this? प्रतीक्षा, आशीष, पंकज. Not a telescope. It's not a telescope. Wrong. It's not a telescope. It looks like a telescope, but it's not a telescope. It's a satellite with a radar. This mission is called NISAR. क्या नाम है मिशन का? NISAR. The name of the mission is NISAR. NASA ISRO synthetic aperture radar. NASA ISRO synthetic aperture radar. This is the name of the mission. Now this is the next mission. जल्द ही this mission will be implemented. जल्दी ये मिशन को implement करने जा रहा है. This is about the next mission which is lined up. Now what do you see this one? This is radar. ये जो है radar है. ये डुअल रडार है, दो रडार. इसमें दो है, वन अबव द अदर. दोनों को एक साथ में लॉन्च किया. दिस इज सैटेलाइट, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा. नाउ दिस यहां पर जो है व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एल बैंड पोलरीमीटर. पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. There will be low frequency L band on which the data will be collected.
what we collected, data will be collected, L band. So in that case, L band, right, we will find here the L band. So L band kind of thing. So L band, you will have that particular system there, and this is by NASA. And there is another one called S band, another frequency band, polarimeter, that will be given by ISRO. ये इसरो के द्वारा होगा. या दो ऐसे frequency radar है. Radar send the radio waves and take the data back. It's something called bounce back. The instrument will send the pulse of the signals, radio waves, which will bounce back. Ultra high frequency, UHF, and will be able to do a lot of study, just like a remote sensing satellite, just like a remote sensing, what we call Earth observation. But this particular mission has got some dedicated objective. It will be in the low Earth orbit. Again, it will be put into an orbit 647 kilometers above the surface of the Earth. पृथ्वी के सतह से 647 या 600 किलोमीटर की दूरी पे जो ऑर्बिट होगा, वहां पर निसार को प्लेस किया जाएगा. एंड दिस विल बी लॉन्च्ड बाय ISRO, इसरो का GSLV Mark 2. हम कौन सा रॉकेट यूज करेंगे? GSLV Mark 2 MK2. See, the most advanced rocket we have GSLV MK3, but here we are going to use GSLV MK2 Mark 2. कैसे पता चलेगा Mark 2 का क्या है? जहां पर F लिखा होगा, F14, F16, wherever you will come across the name of the rocket GSLV with letter F, right? F with the number, so that is a Mark 2. That is a Mark 2. जहां भी F लेटर के साथ नंबर होगा GSLV का, वो Mark 2 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 2500 किलोग्राम तक के वजन के सैटेलाइट को लॉन्च करा सकता है अर्थ के ऑर्बिट पे. 2.5 टन or 2500 kilogram satellite can be launched into the orbit, and this will be having 12 days cycle, polar, polar orbit, dawn to dusk, morning to evening. This type of satellite orbit will be, and again 647 kilometers, or you can say around 600 kilometers in the outer space from the surface, where this NISAR will be placed, and will be placed in such a way so that it will cover the polar side of the earth, उसको वहां पे कवर किया जाएगा. That will be part of it here. So this mission NISAR, right, NISAR mission, this is going to be a very landmark mission, because one is this one, study of cryosphere. Frozen part of the earth. Now when you say cryosphere, one will be poles, and you know that Arctic and Antarctic, आर्टिक का अध्ययन और अंटार्कटिका का अध्ययन किया जाएगा. सेकेंड विल बी हियर ग्लेशियर्स, माउंटेन ग्लेशियर्स, और थर्ड जो है परमाफ्रॉस्ट. अगेन यू नो परमाफ्रॉस्ट पार्ट ऑफ आर्टिक, and you know that these all permafrost, mountain glaciers, Arctic and Antarctica, the snow cover is melting because of global warming, climate change impact. In terms of climate change impacts, global warming का एक impact है ये snow and ice का melt होना. That will be studied through this dual frequency range, the SAR, synthetic aperture radar, will study. Not only this one in terms of melting of cryosphere, but again
this also will be connected with the changes in ecosystem. Forest, grassland, jitne bhi ecosystems hai, such as, you know that forests are undergoing change there, right? Wherever the grasslands are there, they are undergoing changes there. So any such dynamic thing. And now you know forest fire, wildfire. Wildfire, forest fire. Then again, biodiversity loss, biodiversity part of it. Coral reef, coral bleaching. All this part, mangroves, coral reefs, all this will become the part of this particular mission there. And another thing here, this is linked with disaster. Disasters and natural calamities, what other things will be here? Let's say earthquake, landslide, right? Snow avalanche. I've written here wildfire, forest fire. Whatever this kind of things will be there. And that will be connected with the dynamic change of that. Even the prediction of earthquake, whatever happening inside the earth, पृथ्वी के नीचे जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, वैगनर थ्योरी, even interior of the earth, particularly from the earthquake, will be seen there. That is again here, this one. Interior of earth, particularly the crust, and will be able to even do the forecast of such kind of a movement of plates and the in terms of the earthquake. Another thing here, this one, water cycle, global water cycle, hydrological cycle, global hydrological cycle and changes. You know that rainfall, precipitation, cloud formation, and what is happening because of the excessive heat, the warming, cloud formation, moisture, rainfall pattern, that is changing. El Nino, La Nina. Again, you can connect to the geography. And when there will be impact on the rainfall, that is going to impact agriculture. Agriculture will be impacted. कृषि पे इसका प्रभाव पड़ेगा. अगर हमारा जल चक्र प्रभावित हो रहा है तो उसके कई परिणाम हैं. एक जो है, जो सबसे पहला जो होता है वाटर साइकिल का जो जल चक्र का प्रभाव है, वो है हमारा मेघ का बनना, क्लाउड का बनना, बारिश, वर्षा. और साथ साथ में अगर वर्षा में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो कि भी आजकल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो उसका सीधा इंपैक्ट कहाँ है? कृषि में, एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एट रिस्क because of the impacts of the climate change. And one of the aspect of the global warming climate change, the link with the water cycle. So NISAR will study water cycle. NISAR will study water cycle. Another very important mission. बारीकी एक एक चीज को ब्रेक करना, चीजों को समझना. That's what you require, है ना? You require this kind of a thing here. तो जो भी ऐसे फैक्चुअल चीजें हैं, whatever the things are there, you have to be aware of it. And as I've said here, तो पहला ये चीज है कि मिशन क्या है. बहुत ही जल्दी निसार होने वाला है. The NISAR is going to be very soon another landmark mission of ISRO from current aspect there. At the same time, you should know the objectives. क्या क्या objectives है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कि where what type of things we are going to do, we must be aware of it. Right? So I'm just today I've started with space and astronomy. तो ये मैं सारे important areas को मैं बता रहा हूँ. Yes, Pankaj, you are very right. Bangalore water crisis. Again, you know, fresh water. When you look at water cycle, the fresh water, and Bangalore is under severe pressure or stress because of the water scarcity.
too much of urbanization and all. वहां एक लेक का नाम आता है बेलांडूर लेक, और द नेम ऑफ द लेक बेलांडूर. एक तो है pollution, second water cycle, disappearing lakes in Africa and all. Again the lakes are getting impacted. India's lakes are being impacted. Again the water cycle. So this particular NISAR mission will be able to do the mapping and collect all data. Very important mission here, right? It's going to be a very very important mission. तो ऐसे जो भी स्पेस मिशन आ रहे हैं, you have to read. आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है, चीजों को देखना है वहां पर. Now let's go to the next one. Next very important topic. What is this? क्या है ये? What is this? Anybody? I am seeing the chat box. क्या चीज है यहाँ पर बताओ? Okay. All right, huh? What is this? Tell me. You are aware of this. This is a very very important mission. ये बहुत important mission है. Very good. Aditya L1. Very good. Aditya L1 mission. Study of sun. है ना, सन को स्टडी करने के लिए. India's solar mission, right? India's solar mission, Aditya L1, and you can see here L1, Lagrange point 1 between sun and the earth, and India has successfully reached to the Lagrange point here. And what you see here, this is the orbit. ये जो आप ऑर्बिट आप देख रहे हो, this is called halo orbit. This is called as a halo orbit. ये जो ऑर्बिट है, this orbit what you see here, this is L1 point, Lagrange point 1. How far is Lagrange point 1? अर्थ से कितनी दूरी पे Lagrange point 1 है? 15 lakh kilometers, or you are aware 1.5 million kilometers की दूरी पे यहाँ पर है. Now here this orbit what you see, इसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट कहते हैं. इट इज 3-dimensional ऑर्बिट. L1 पॉइंट के पास ये 3-dimensional ऑर्बिट है, एंड 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, है ना. एंड व्हाट इज द पॉइंट हियर? तो व्हाट वी डिड हियर, इनिशियली वी प्लेस द आदित्य इनटू द ट्रांसफर ऑर्बिट. ऐसे ट्रांसफर करके हम लोगों ने आदित्य को अर्थ के बाहर ले जाके, एंड देन गिविंग अ मैन्यूवर को जाके हमने L1 पॉइंट पे पहुंचाया. वी ब्रॉट टू द L1 पॉइंट. व्हाई इट वाज इन द न्यूज? जनवरी मंथ में वी सक्सेसफुली इंसर्टेड आदित्य इनटू द दिस ऑर्बिट अराउंड L1, Lagrange point 1 जो है. तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी डिड इट विद द support of ESA. In this one, European Space Agency. This helped India, that is ISRO, in insertion to the halo orbit. ये जो L1 के आसपास जो हेलो ऑर्बिट है उसमें प्लेस करने में ESA has helped India, and we have been successful in doing that. और अभी हाल फिलहाल में न्यूज में भी रहा है कि जो स्टडी ऑफ सन, उसके बारे में जो जानकारी जो है वो चीज हमको मिल रहा है. तो अब यहाँ पर जब हम when we come to this one Aditya mission here, so what is very very important thing which you need to remember from exam point of view? अब जैसे कि Lagrange point है, राइट, Lagrange point. तो अर्थ एंड द सन की हम बात करें तो उधर 5 Lagrange points आते हैं. तो पहला पार्ट ये चीज है कि व्हेन वी टॉक अबाउट Lagrange point here,
तो यहाँ पे कहाँ पर है, तो L1 पॉइंट जो है विच आई सेड हियर, दैट इज द 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, राइट, फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर जैसे सन एंड अर्थ, sun and the earth system, so here the L1 point here where this Aditya has been placed, so that it continuously can watch sun and get all the data back to the earth, है ना, कि वो पूरा लगातार देख के सारा डाटा जो है it can communicate back to the earth। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देयर अगर हम दो हेवनली बॉडीज ले, two celestial bodies, and based on the gravitational pull, gravitational attraction and the centrifugal forces, there are 5 such points, and all these points change their position as the body rotate or revolve around each other. As the earth revolves around the sun, all these 5 points move in the 3-dimensional space. L1, L2, L3 are on the straight line. L1 is between sun and the earth, L2 at the back side of the earth, L3 is the back side of the sun, L4 is ahead, L5 is behind। ये चीज है। तो वहां पर क्या होता है, एक तरह का बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड फ्रॉम एवरीवेयर, है ना, वहां पर ये चीज वहां पर। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मून, अगर मून की बात करें, अर्थ मून की हम बात करें, तो अर्थ मून डिस्टेंस इज अराउंड दिस साइड 3,86,000 किलोमीटर, 44 है ना, 3,80,000 अगर हम अप्रोक्सीमेट ले लें, लेट्स से 86,000 किलोमीटर्स, right, approximately here. So moon is here, so L1 point is even far away from the moon, चंद्रमा से भी दूर है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा का कोई भी असर, कोई भी एक्लिप्स, और इसे एक्लिप्स जो ग्रहण वगैरह होते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द एक्लिप्स। सो हियर फ्री फ्रॉम, या what is the occultation? Occultation due to eclipse। आपने ये पढ़ा होगा एक्लिप्स के बारे में कि when the moon comes between sun and the earth, the shadow of this moon which fall on the part of it, right? So that is a solar eclipse comes there. What happened lunar eclipse? When the earth and the earth's shadow fall on the moon, where lunar eclipse comes. So here particularly the part of the solar eclipse. So without any hindrance, without any obstruction, sun can be viewed and all the data can be sent back to the earth. Now another thing here, what we have given this name Chandrayaan, right? That is the first dedicated सोलर मिशन, ठीक है, इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, व्हाट वी कॉल एज अ पेलोड, हिंदी में कहते हैं नीत भार बोलते हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड द पार्ट ऑफ इट। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मिशन है, पापा, जो इंस्ट्रूमेंट है पापा, अभी ये न्यूज में था, पापा, that is a plasma analyzer package for Aditya। Plasma analyzer package for Aditya, इसका फुल फॉर्म जो है, and is for studying solar wind। आपको पता है कोरोनल मास इजेक्शन, and what is very important here, objective, if we look at the Aditya's objectives, तो फर्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ आउटर कोरोना, द आउटर मोस्ट कोरोनोस्फेयर, कोरोना ऑफ सन, सूर्य का जो बाहरी कोरोना है उसको स्टडी करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड अप होता है, टेम्परेचर गोज मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। देन अगेन अनदर थिंग हियर, स्टडी ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन, जो आपको पता है सोलर विंड कहते हैं,
powerful particles and wave, right, emitted from sun that reaches to our solar system and affect our satellite system, power grid failure, navigation, communication, सारा कुछ वो affect करता है. It has also linkage with warming, global warming also. It also affects the ionosphere and all this auroras and lighting in the sky, northern light, aurora borealis. तो ये सारा चीज होता है उससे linked है. And very powerful wave that disrupt our satellite system. तो उसको स्टडी करना. Space weather, what is something called here? Study of space weather and how this space weather change because of the sun's influence. Another very important thing about this mission is to study outer corona's temperature, which is very high compared to inner photo disk. अंदर जो फोटो डिस्क है, फोटोस्फेयर, उसका तापमान कम है, 6000 degree Fahrenheit. But the outermost part of the sun, corona, it get heated up millions of degrees Celsius. So again here, study of temperature difference. So temperature difference है between corona, outer corona and photo disk. जो अंदर का फोटो डिस्क है, कहने का मतलब है कि अंदर गर्म होना चाहिए, बाहर ठंडा होना चाहिए. जैसे हम दूर जाएंगे, व्हाट इज सन? सन इज अ स्टार. व्हाट इज सन? सन इज अ स्टार. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन. हाइड्रोजन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम. दैट जनरेट enormous amount of heat. So in inner part of the star, our sun is a star. The furnace, nuclear furnace, nuclear fusion, very hot, right? So inside should be heated up more. Outside, as you go far away, should be cooler. Corona is the outermost part. And corona is the outermost part. उसका तापमान कम होना चाहिए, अंदर गर्म होना चाहिए, उल्टा है. Just opposite. Inside is cooler, outside is hotter. So what is the cause of such kind of heat? Plasma, magnetic flux, even the magnetic field, all this being studied by 7 instruments, payload of Aditya mission. So that becomes very important, right? From the exam point of view, it becomes really very important. तो आपको एक मिशन के बारे में पता होना चाहिए, प्लस ये चीज वहां पर है, ठीक है. एंड यू नो दैट वी यूज्ड ourselves, we did this one, all developed the satellite, sent it there. Yes, we took the help of ESA and all this. NASA का सिमिलर में पार्कर प्रोब है. If we take NASA in study of sun, there is a Parker, solar Parker probe. It's a spacecraft to flew very close to the sun. सूर्य के करीब, बहुत करीब जाके स्टडी करने वाला पार्कर प्रोब है. नासा एंड ईएसए का जॉइंट मिशन है सोहो. जस्ट लाइक आदित्य, दिस मिशन इज देयर. ये ऑब्जर्वेटरी यहां पर है. सोहो इज ऑलरेडी इन L1, ये भी L1 में. यहां जो हेलो ऑर्बिट है, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, उसके आसपास वहां भी जहां पर हमने L1 रखा है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स और 15 लाख किलोमीटर्स, सेम पॉइंट देयर इज अ सोहो. एंड नाउ वी हैव आल्सो प्लेस्ड अनदर वन आदित्य. दैट मींस इफ दिस इज L1, so let's say one is a soho. Soho is already working there. Another one we have placed Aditya. Point is the same. Point जो है same है, but orbits are different. One orbit is occupied by Soho
which is studying the sun, everything, and that is joint mission of European Space Agency and American Space Agency, NASA. Another one around the same point L1, India has reached, that's the Aditya spacecraft, right? So that becomes very very important here, correct? तो ये सब चीजें जो मिशन है, जो चल रहा है ऑनगोइंग मिशन, तो वो पता होना चाहिए, राइट? One must always be knowing that. That becomes really very important for the exam. ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. This is what comes into this, right? So this is what I have mentioned as a part of the discussion part, and from current aspect, this all things you have to be going through it. आपको ये सब चीजों को पढ़ना है, जो भी चीजें ऐसे न्यूज में आ रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है, ठीक है? लेट्स टेक वन मोर टॉपिक, एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दिस वन, एक्सपोसैट, एक्सरे पोलरीमीटर. Again, this was launched January month, 1st Jan. Another very important satellite of India. And this is for astronomical study. This is for astronomical study, X-ray polarimeter kind of thing there. If you look at here, this mission, what is called here, let me write here. ये जो mission है, Exposat mission. राइट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन जो है, राइट, ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली हमने लॉन्च किया है. तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सरे. जो यूनिवर्स में ऐसे एक्सरे सोर्सेस हैं, पर्टिकुलर द ब्लैक होल, तो एक्सरे सोर्सेस है ना, उसको पता करना है. जैसे कि उसमें एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये है ब्लैक होल. You know that when the star die, right, and it collapse, super dense mass, nothing can escape, even the light, black hole. So that, but black hole also generate radiation, and one of this could be X-ray. So black hole is there. Then neutron star, the star which is made of neutron particle. Even supernova, when the star die with a supernova explosion, where the स्टार बर्स्ट, जहां तारे का विस्फोट होता है, सुपरनोवा, अगेन द एक्सरे कुड बी फाउंडेड, राइट? सो इट हैज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ पोलरीमीटर. दैट इज इंस्ट्रूमेंट. टू स्टडी एंड फाइंड आउट सच काइंड ऑफ सोर्सेस. एक्सरे का क्या क्या सोर्स है यूनिवर्स में जो वहां पर आ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए. और व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज फॉर दिस इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट. टू 2015 हम जाए, वी गो बैक, इंडिया का पहला फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट वाज एस्ट्रोसैट. Right, if you go back to background here, so Astrosat, right, that is India's first. It is another astronomical satellite, right, of the countries. It's a multi-wavelength. Here, it was multi-wavelength. विजिबल, जो भी विजिबल लाइट का सोर्स है, इसमें भी एक्सरे था एंड यूवी लाइट, यूवी रेज. 2015, that time ISRO developed a satellite called Astrosat. उस समय भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, जिसको मिनी हबल भी कहा गया, जैसे हबल टेलीस्कोप ऑफ नासा, वी सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड इट. उसका जो इंस्ट्रूमेंट था, 5 इंस्ट्रूमेंट थे, 5 इंस्ट्रूमेंट्स एज पेलोड टू स्टडी, टू डिटेक्ट सोर्सेज ऑफ विजिबल लाइट, नॉर्मल लाइट, उस पर फोटोग्राफी करना, इमेज डाटा कलेक्शन, दूसरा एक्सरे, और तीसरा था यूवी रेज. जबकि एक्सपोसैट इज फ्रॉम द एक्सरे पोलरीमीटर, फ्रॉम द एक्सरे सोर्सेज टू फाइंड. So you can say Exposat is the continuation of Astrosat mission.
एस्ट्रोसैट को 5 साल के मिशन के लिए बनाया गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में अब इंडिया ने एक्सपोसैट को किया है 2024 दिस हैज बीन लॉन्च्ड, राइट? तो दैट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज वेयर द दिस थिंग कम्स हियर, ठीक है? ये चीज जो है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज पॉलिक्स, है ना? ये पेलोड यहां पर है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI इन बैंगलोर, दैट इज डेवलप्ड दिस पॉलिक्स, ये इंस्ट्रूमेंट है पोलर एक्सपोसैट में, पोलरीमीटर दिस इंस्ट्रूमेंट इज देयर। फिर यहाँ पॉलिक्स विल स्टडी द डिग्री, सी द डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ब्राइट एक्सरे सोर्सेस, ठीक है? यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सरे सोर्सेस का अलग अलग एंगल का पता लगाएगा, दैट व्हाट कम्स हियर एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट all such information. So another thing which has been the news, current news, ये important होता है, वहां पर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? Is it clear here? तो which I brought here, तो उसके बारे में जो कुछ भी करंट में इसको लिंक करना है, right? Astronomical studies and everything there. Any idea what is this? ये क्या है? ये भी न्यूज में रहा है, कोई भी जो अभी सेशन देख रहे हैं कैन टेल मी देयर व्हाट इज दिस? ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार रखना है इस बार के एग्जाम के लिए, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स देयर एंड देयर द बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एनीवन कैन गिव मी द आंसर, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स देयर, यस वेरी गुड पंकज, यू आर वेरी राइट, लद्दाख डार्क स्काई रिजर्व, this is the dark sky reserve, India's first dark sky reserve. There's a place called Henley in Ladakh, dark sky है, and what you see right now, ये जो आप देख रहे हो ये मिल्की वे है, what you see in the sky, the Milky Way, the image is there. When the sky is dark, we will be able to see the stars, galaxies and all this part of it. It requires dark sky. तो इंडिया का पहला जो है, India's first dark sky reserve has been created, and it has a not only study of, see here we have a telescope here. If you see, this is a telescope. A telescope है to study the sky. So dark sky reserve here means again this one, light pollution, because light pollution affect astronomical research, है ना? अगर स्काई में ग्लेज है, ग्लो है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी को हैम्पर करता है, तो उसको कम करने के लिए हेनले लद्दाख में वहाँ डार्क स्काई रिजर्व, दैट मीन्स द विलेजेस or the people who live in around that area, they all are cooperating with the government and they will not have any light during the night time. That's what the dark side. So it has two aspects of that. One is that astronomical study, okay? One is the astronomical study, our scientists do, and second is that it can also promote astronomy tourism. People can go to Ladakh, people can go to this Henley, and they can stay overnight. वहाँ रात में रुक कर एक तरह का टूरिज्म जो होता है, पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन, राइट? वहाँ जाके रह के और टूरिज्म का वो आनंद ले सकते हैं. They can have that kind of a thing there. So he is making that kind of arrangement where even the people can earn money there, livelihood. Where all those kind of जो उसका हॉबी होता है, स्टार गेजिंग, looking at the star with telescope, study of the things there, they can go to such place, dark sky reserve, and they can stay over the night and can study the stars and galaxies, and that can not only education but will also promote tourism, income generation, and plus research.
So that is what has been done there, right? This has been now been brought there. This is a very, very important aspect, and we have a telescope here. We have a telescope. We have ground-based telescope is there, right? Which we can use for part of it. Henley has got Indian Institute of Astrophysics, IIA, which operates this kind of telescope there, right? Now let me go to another current affairs topic. This one, 30-meter telescope. What is it? What do you see here? 30-meter telescope, TMT. The aperture size here is a 30-meter. Another very important project which is going on, the 30-meter telescope, TMT. ये जो प्रोजेक्ट है, ये मोना किया in, there's a hill in the part where it is made in Hawaii Island. Hawaii Island, there Mauna Kea, MAU, Mauna Kea. वहाँ पे टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, and it is basically the यह जो countries है, one is USA, and one of the very important, university comes Caltech, California Institute of Technology, Caltech, being the part of this project. American government, then Canada, right? And if you look at this side here, so India, Japan, and China. So 5 countries are the part of this project, building this kind of a telescope. What do you see? This is a telescope, is an observatory, is a ground-based astronomical observatory. The 30-meter matlab the size. See, when you say 30 meter, there is aperture size. Here, there is aperture size. ये जो aperture का size होता है, what you see the size, this is what called 30 meter. इसको बोलते हैं aperture. उसका 30 meter is very big one. The telescope, which is the even the night sky, whatever the radiations are coming, it will be able to capture. और ये प्रोजेक्ट काफी सालों से न्यूज में रहा है, पिछले 7-8 सालों से न्यूज में रहा है. इसमें क्या हुआ कि हवाई आइलैंड में द लोकल इनहेबिटेंट्स, दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट. जो वहां के जो लोकल बासिंदे हैं, खासतौर पर जो वहां के जो ट्राइबल इंडिजिनस पीपल आर देयर, बिकॉज Mauna Kea, this Mauna Kea, this considered to be sacred. इसको पवित्र माना जाता है. ये पहाड़ है जहां ये बन रहा है हवाई आइलैंड में, and that Mauna Kea, that place is considered to be religious sacred area by the local Hawaiian people, the local community which lives there. And again, looking from the environmental perspective, ecology and environmental perspective, there have been a lot of protests against this project, astronomical project, right? Even the matter has gone to Hawaiian Supreme Court of Hawaii for this particular project. तो ये अभी recently Hindu paper में था, right? Recently it was in the Hindu paper, but this particular, what you see is there is an aerial view. So this is another part of news which has come in the, which you have to be aware of it. इसके बारे में पता होना चाहिए. Now coming to the last part here, this particular one. What you see the photograph here? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया कर रहा है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी.
INO, Indian Neutrino Observatory. To study neutrino particles. है ना, ये भी काफी दिन से न्यूज में रहा है. एंड विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है कि ये जो आयनों का जो प्रोजेक्ट है दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दिस वन. ये डिटेक्टर है, राइट. व्हाट यू सी हियर, दिस इज डिटेक्टर. जो आप जो देख रहे हो ये हिल है. आई गिव द नेम ऑफ द हिल. दिस हिल इज कॉल्ड बोधी हिल्स. Bodhi Hills, that is the part of any district of Tamil Nadu. ये Western Ghat landscape है. This Bodhi Hill that comes into Western Ghats landscape. Right, and is a part of Tamil Nadu. Very near to that is the Kerala side, and is a biologically very rich. Forest area is there with elephants and all those kind of species are there. So one of the very important objection against this scientific project was the ecological part of it, ecological aspect. Because of this hill and the surrounding area is ecologically sensitive, and we are going to build this particular lab inside the hill. So there will be a tunnel. You can see here, there is going to be a tunnel. इस हिल के नीचे जो है ये टनल बनाया जाएगा. दिस विल बी अ टनल विच विल बी मेड इनसाइड द हिल, एंड देयर दिस सिस्टम विल बी देयर. एंड व्हाट यू सी हियर, दिस वन, दिस इज द शीट्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन. मैग्नेटाइज्ड आयरन प्लेट्स आर देयर. पहला क्या है कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. व्हाट आर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स? दीज आर दोज very subatomic particle, very fundamental particles which almost travel with the speed of light. न्यूट्रिनो का जो स्पीड है प्रकाश के स्पीड के बराबर है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कहाँ ये प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, जहां जहां ऐसे यूनिवर्स में है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहां बनता है. सन हमारा जो सन है दैट एमिट न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है? आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर. तो जब वहां पर रेडिएशन आता है तो आइनोस्फेयर में भी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता है. सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन वहां से न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आता है. देन कॉस्मिक न्यूट्रिनोज विच इज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज, other stars, what is called cosmic messenger. It may have information about the other galaxies, but they travel so fast and they cross every object. इस जगह पे अभी भी जहां भी हम हैं, हजारों के न्यूट्रिनो पार्टिकल हमारे बॉडी के थ्रू क्रॉस करता है. It just cross our body. They can pass through any such object. So what is one of the challenge? First challenge is to reduce the speed of the neutrino particles. ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल आ रहा है, दिस ऑल न्यूट्रिनो पार्टिकल विच इज कमिंग, ये सारे जो न्यूट्रिनो पार्टिकल आ रहे हैं उसके पहला स्पीड को कम करना है, इसके जो है स्पीड को कम करना है. दैट स्पीड हैज टू बी रिड्यूस्ड. तो ये जो हिल है ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस हिल इज मेड ऑफ अ, यू नो दैट साउथ इंडिया दैट इज मेड ऑफ अ igneous rock, है ना, lava, igneous rocks, and they're very hard rock. This hill, this Bodhi hill is a hard rock, is there. This hard rock, when the neutrinos will cross through this hard rock of this hill, what you see the photograph right now, तो जब ये न्यूट्रिनोज क्रॉस करेगा इस हार्ड रॉक को, क्योंकि वो इग्नियस रॉक है
तो जब वो क्रॉस करेगा तो उसके स्पीड में कमी आएगी, द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी लॉस्ट एंड द स्पीड विल रिड्यूस्ड, है ना, यहाँ पर एंड द मोमेंट इट गोज टू दिस मैग्नेटाइज्ड iron plate which have been placed there, again the speed will reduce there, and then there will be a detector, यहाँ पे detector होगा which will capture the neutron particle and study its properties, its behavior. उस न्यूट्रॉन पार्टिकल को डिटेक्टर जो नीचे है, जब वो कैप्चर होगा उसको स्टडी किया जाएगा, एंड साइंटिस्ट विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सच न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है? यस. अब इसका सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है? अभी तो नहीं है. राइट नाउ स्टडी ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वर्ल्ड वाइड, whether you talk about INO project which is under construction, or you talk about China, they have got the project Juno, or Japan has got Kamiokande. Right now Japan has built super Kamiokande, again neutrino particle research. Antarctica में ice cube which is within the ice of Antarctica, cubic kilometer ice cube, and बहुत important neutrino particle observatory है where UPSC has already asked question, है ना. Plus whatever I have discussed here, like Juno, चाइना का अपना सुपर कमिकोंडे, जापान का अपना न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑब्जर्वेटरी है. नाउ इंडिया इज बिल्डिंग INO. हमारा न्यूट्रिनो पार्टिकल रिसर्च शुरुआत से रहा है, एंड इनिशियली अर्लियर वी हैड अ लैब टू स्टडी न्यूट्रिनो पार्टिकल इन द अंडरग्राउंड माइन ऑफ कोलार गोल्ड फील्ड, यू नो KGF, कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटका, underground mine. We had a lab for neutrino particles, but then the government of India decided to close Kolar gold field, Kolar gold mines. So our neutrino particle lab was closed there. Now this is going to be the new lab to study neutrino particles, and here TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, right? Tata Institute of Fundamental Research, that is the nodal scientific and research and academic center which is the part of the project, but there is a collaboration with other scientific organizations. At the same time, even international foreign collaboration, अंतरराष्ट्रीय तौर पे भी बहुत सारे जो संस्थान हैं वो सब भी स्टडी करेंगे न्यूट्रिनो पार्टिकल. इसका जो नोडल यहाँ पर है TIFR, which comes under डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE के अंदर आता है. इस प्रोजेक्ट के कारण जो वहां का इकोलॉजिकल इंपैक्ट होता, उसके लिए मैटर वेंट टू द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहां मामला गया था. बट देन यू नो NGT, राइट, वो डिस्कशन हुआ, बट फॉर सम यू नो लुकिंग इनटू आवर साइंटिफिक प्रोग्रेस, आवर फ्यूचर रिसर्च इन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, इट हैज बीन अप्रूव्ड. इनिशियली उस पर रोक लगाया गया था because of the impact on the area, but after doing proper EIA study, environmental impact assessment, EIA report and study, and with looking into the kind of advantage what we have in terms of research study of neutrino particles, तो ये प्रोजेक्ट को फिर अप्रूवल मिला है, with again taking care of the ecological aspect of that area of the Western Ghats. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखना है. ऐसे जो भी प्रोजेक्ट, ऐसे जो भी चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आता है, तो आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, एंड UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट. सो एनीवे, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर. पंकज हैज बीन गिविंग द वेरी एक्टिव देयर, एंड ऑल ऑफ यू हु हैव बीन पार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन. तो रियली आई एम वेरी वेरी एंजॉयड टीचिंग यू, राइट. अभी और भी सेशंस होंगे, आप आई विल बी कवरिंग वन बाय वन. तो मेरा फोकस यही है कि टारगेटेड वन to go to diversified topics where the questions can be asked in the exam. I will be covering that, है ना. वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा. So if anything is there which can really benefit all of you, that will help there. At the same time, this IQRA IAS platform there, that is what this session is all about there. ठीक है. So any doubt you have there, or else we'll stop this session now. ठीक है. तो ये सारा जो है मैंने अभी सारी चीज आपको करवाया हूं. तो वी हैव गॉन टू सो मेनी टॉपिक्स इन 2 hours, है ना. ठीक है.
Not there? Okay. So if there's no doubt, we'll stop this session and we will meet next day, tomorrow, again the same time, 8 PM this live session will be there. और हम लोग ऐसे ही बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को मिलाकर हम लोग डिस्कस करेंगे. और जो टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप प्लीज उसको और डिटेल में जाके पढ़िए, सो दैट ना कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू आर द वन टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, वट एवर एरियाज आई एम हाईलाइटिंग दैट पार्ट इज देयर, प्लस you go further more into that. At least you are getting a direction, you know, you are able to get the direction part of it. Okay. So very thankful to all of you, and we will meet soon tomorrow, right? So thank you everyone. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye. Thank you.